The rising unemployment has wreaked havoc with the economic and social fabric of Gilgit-Baltistan. Many accuse the puppet administration propped up by Islamabad for the deepening crisis. The remote region, which has been under an iron curtain for the past 6 decades, has prevented private entrepreneurs from investing in the region. Lack of infrastructure is another reason which has prevented the growth of industries that generate employment. Very rarely does the administration embark on a recruitment drive, but when it does, a lion's share of the vacancies are cornered by people belonging to different provinces of Pakistan, locals allege. जो गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, मैं दोबारा ये बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए उनके लिए रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जो अखबारात में जो इश्तिहार शाया हुआ है उसमें बाकी मुल्क के तमाम सूबों और आज़ाद कश्मीर के तो मसाइल रखने वालों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। Gilgit-Baltistan is a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. For over 6 decades now, the region has been illegally occupied by Pakistan. Pakistani Prime Minister Yusuf Raza Gilani had in September 2009 announced a package which was touted as a panacea for all the ills plaguing the region. But the proposals have remained on paper and there has been no change on the ground. Pushed to the margins and with no means of livelihood, many have been forced to commit suicide. The acute poverty and burgeoning unemployment is fueling disaffection against the local administration. Many blame the Mehdi Shah government for being unmindful of the aspirations of the youth here. गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं मगर वो फाटा साइड पे चली जाती हैं। गवर्नमेंट अगर एपीएससी में कोई वैकेंसी आती है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ फाटा के साथ कोटा मखसूस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार हो जाते हैं और जितनी भी वैकेंसी गवर्नमेंट की आ जाती है वो फाटा की तरफ चली जाती हैं। Locals allege the policy of filling vacant posts with people from its different provinces is a part of Pakistan's wider strategy of demographic re-engineering. The rampant corruption and nepotism has also prevented genuine applicants from securing a job. यहाँ पे ये ज़रूर मैं ये कहूँगा कि अगर मेरिट पे भर्तियाँ की जाएँ और मेरिट पे काम किया जाए तो जो बंदा उसमें जो है किसी तरह से बेरोज़गार रह भी जाता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा, उसको एहसास नहीं होगा, उसको ये सिर्फ यकीन हो कि जो भी काम हुआ है मेरिट के ऊपर हुआ है। Gilgit-Baltistan has practically been off the map of any mainstream political and constitutional structure of Pakistan. But it has continuously suppressed the people of the region, denied them the most basic constitutional and human rights, blocked access to development and an equitable use of even local natural resources. But all this is now beginning to change. The winds of change which are sweeping across the world are also fueling the quiet rebellion which has been simmering here for long.